Today, I'm going to start with a new chapter and economics, right? In your ninth standard, आप लोगों ने अभी तक ninth standard के अंदर, you must have understood what economics in ninth and 10th is all about. क्योंकि economics जो है, वो एक vast subject है. And many people, in fact, I can say the richest person would be more strong in economics and finance rather than anything else. हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वी आर नॉट रीडिंग फॉर अ पर्सन और फॉर अ कंपनी, वी आर रीडिंग फॉर द नेशन. तो जब हम वर्ड इकोनॉमिक्स बोलते हैं तो दैट मीन्स किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है. यानी अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिल्ली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पंजाब, अगर आप डिफरेंस देखने के लिए कहूं मैं आप, तो आप कहोगे मैम वहां पर जो है दिस फैसिलिटी इज नॉट देयर, इन दिस एरिया दिस फैसिलिटी इज देयर. इफ आई कंपेयर माय ओन लैंड, तो वी बिलोंग फ्रॉम चेन्नई एंड चेन्नई के अंदर जो मेरा मतलब मेरे इन लॉज के साइड का जो एंसेस्ट्रल विलेज है, आज हम लोग हैं 2024, right, in April 2024. And in April 2024 also, you don't have anything there. The road is very beautiful. You will find greenery all over. But if you want to go to that village, आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए. या if you want to go by bus, then morning में 5 बजे बस आपको वहां छोड़ देगी और इवनिंग 5 बजे वहां से वापस ले. Believe me, even today there is no grocery shop. I recently went over there and मुझे थोड़ा मतलब I have a bad habit of taking Pepsi. मतलब I prefer. तो while we were coming, it was too hot. तो मैंने कहा चलो we'll take Pepsi. And there is only one shop, और वो भी शॉप नहीं है, that's a घर है. उन्होंने उसको एक शेड बना रखा था. तो they said we don't have all these. There is no vegetable vendor there. I said, how do you manage? They said, normally we go on Saturday, Sunday, get it. And if we want, we barter. We have lots of खेती बाड़ी here. तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं. This is how even in today's, मतलब electricity is there and what you call as road is there. No school, no hospital. No, मतलब सबसे बड़ी चीज तो जो मुझे हंसी आ रही थी, ग्रोसरी शॉप, पेप्सी, जो कि even you find it on the bus stands. You don't have that. So if I compare it with my Chennai house or Delhi house, so what I would say is that area is not developed. So जो हमारा economics है, that deals with how a country starts its development, what are the factors we take into while we talk about the development of a country, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब बहुत सारे हमारे जो ये सेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग जो है डेटा लेकर हम एनालाइज करते हैं. इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड इफ यू आर टेकिंग इकोनॉमिक्स, मतलब इफ यू आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, यू आर टेकिंग इकोनॉमिक्स, यू विल बी एडिंग इट, यू वुड बी इवैल्यूएटिंग इट. एंड जो बच्चे आगे परफॉर्म करते हैं बीए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और समथिंग लाइक दैट, दे हैव इट इन डेप्थ. तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. एंड इन योर 9th and 10th यू हैव ओनली द थियरी पार्ट. आपके पास सिर्फ एक थियरी पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा बताया गया है कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे एंटर करते हैं. So you must have read the first chapter, Palampur, if you remember.
And you had read that why Palampur is called as a developed village. तो हमारा जो 10th का पहला चैप्टर है दैट इज डीलिंग विद द चैप्टर डेवलपमेंट. एंड अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दिस इज अ रियल लाइफ एग्जांपल, अ ट्रू एग्जांपल. एंड ऑफ कोर्स अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट व्हाट इकोनॉमिक्स इन रियल सेंस मीन्स. एज आई सेड, डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है व्हेन इन अ एरिया, व्हेन एन एरिया, अगर मैं एरिया बोलूं, okay, you are living in Dilshad Garden, you are living in Chanakyapuri, you are living in Defense Colony. So what is the difference in this? किसी जगह पर कोई बेसिक चीजें होती हैं, किसी चीजों में नहीं होती. तो डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है प्रोग्रेस इन एनी एरिया. एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट मींस हमारे गोल्स, हमारे एस्पिरेशंस, हेल्थ, एजुकेशन, इन सबको वी कॉल इट एज डेवलपमेंट. अब ये जो मैंने बना रखा है दिस कम्स एज अ एमसीक्यू. इट मे कम एज अ one marker question. What do you understand by different people having different goals? आपके बुक में भी there is a box made, and in fact last year it came in some school also. तो different people different goal मतलब, as I said, for me development का मतलब है for personally me, रमा को क्या पसंद है. तो मैं हमेशा from right, not now, even when I was a kid, I used to think कि everyone should have more opportunities. कुछ भी हमें करना होता, like if I want to do something, I want to study, I should have lots of opportunities. तो for a farmer, एक फार्मर के लिए उसका गोल होगा, उसके लिए डेवलपमेंट तभी सही माना जाएगा जब उसको when he is getting the new technology, he is getting cheap loans, he is getting some benefit for his farming. Whereas इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आप पूछोगे तो वो कहेंगे कि भाई हमें तो एक्सपेंशन चाहिए बिजनेस का. अगर हमें बिजनेस के लिए सही अच्छे जमीन, लैंड, we are getting loan, we are getting assistance from the government, उनके लिए that is development. For them that is development. For boys, it is in general and it is in the book, I am not saying this thing. Boys के लिए always, because हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और इंडियन सोसाइटीज के अंदर देयर इज सम, मतलब कि टू सम एक्सटेंट इट इज कि अपॉर्चुनिटीज को हम छोड़ देते हैं. लाइक आई नो इन साउथ 100 में से 100 लोग ऐसे होंगे जो बाहर चले जाते. आउट ऑफ 100 गो, मतलब हर फैमिली से देयर माइट बी वन और टू हु इज सेटल डाउन. बट व्हेन आई हैव कंपेयर्ड इट इन नॉर्थ, इट इज लाइक नो, they don't want to send the child, but matlab ki beyond an area. There is always a difference. If you go to western side, you'll find lots of colleges which is dedicated to commerce and science. If you go to southern side, you will find more into technology. तो फॉर द बॉयज अगर हम उनसे पूछते हैं कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, तो वो कहते हैं वी नीड बेटर अपॉर्चुनिटीज. अगर हमें बिजनेस करना है तो वी नीड, मतलब कि समथिंग, हमको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के लिए पैसा, मतलब दे नीड सम अपॉर्चुनिटीज वेयर दे आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. एंड फॉर गर्ल्स इट इज ऑलवेज मोर और लेस फ्रीडम. ये वाला जो मैम ने बताया है इसमें और भी है आपके इन द बुक, because girls are normally not allowed in many areas. There are so many constraints on them, there are so many restrictions. तो वो कहते हैं कि हमें restrictions के बिना we must, as seen in my what you call as institute, but that's a record in fact. It's that most of the time, and अभी 10th का result आने वाला है, means next month, you see the girls will be always on the top. But if you look into the results of 12th, if you look into the admissions in 12th standard, then into
technological colleges and postgraduate, you will find more boys. मतलब वहां बॉयज ज्यादा रहते हैं. Girls excel, but then they don't get the freedom to pursue. I had one, मतलब मेरे पास ऐसे बड़े सारे बच्चे होते थे. Those who were very intelligent, in fact they could do much. Then the parents would say, no ma'am, हमने तो इसको बस 12th तक पढ़ाना था, अब ये बीए करके टीचिंग करेगी. एंड आई यूज टू एज अ टीचर, मैं बहुत खराब टीचर हूँ. पर्सनली मैं बहुत खराब टीचर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है टीचिंग शुड बी डन ओनली व्हेन यू आर बेटर देन योर स्टूडेंट्स. Teaching should not be like because I have to fulfill my responsibilities or I have to earn extra. आप बच्चों का करियर बनाते हो. You are the one who are shaping up the child. आपके ऊपर बच्चा भरोसा करता है. You should not teach anything which is not in your domain. And then I used to, चलो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है, चलो ठीक है. But yes, they don't get that freedom that they can choose their career, they can choose their life partners. So for boys, it is more opportunities. For girls, it is better freedom. अगर आप rural areas में जाकर देखो, the girls don't get the freedom of education. They are not sent to the schools. आप लोग जैसे schools चले जाते हो, you are having all the, they are not allowed. So development is different for different people. आपके पेपर का क्वेश्चन है ये. अब ये जो मैंने इतना बोला, इसका एक क्वेश्चन है. Different people have different goals. Explain it with example. And you can cite out any of these examples, and also the same is given in your book also. But हम सबके लिए एक important चीज है जो हम सबके लिए common है. Whether it is a farmer, a banker, a teacher, a doctor, or a student, everyone. अगर मैं आपसे भी पूछती हूँ why you study so hard, तो आप कहते हो मैम tomorrow I want to earn. So the first most important component and common component is income. फार्मर काम करता है इनकम के लिए, हम पढ़ते हैं इनकम के लिए, डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, नो डाउट it's a noble profession, but definitely income is one more. But क्या सिर्फ इनकम होगा तो सही हो जाएगा? से यू आर देयर इन, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बट उस जगह पर ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही आपको जो है सिक्योरिटी है. विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन सच एरिया? नो. बिसाइड्स इनकम, इनकम के अलावा we want equality, freedom, education, security, pollution free environment. ये सब हम लोगों के लिए चाहिए होता है. That is, ये आपने जो मैंने येलो में लिखा है, this is the question. People look at a mix of goals. Means when you are aspiring something, अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो, तो सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ फैसिलिटीज भी होनी पड़ती हैं. The atmosphere in the area should be good. The area should be safe and secure. Why जहां पर नक्सलाइट्स होते हैं या टेररिस्ट होते हैं वहां लोग नहीं रहते हैं? Why Arunachal Pradesh is less populated? It's a beautiful place, but why it is less populated? Because you don't have the facilities. So that means people look at mix of goals. पहला क्वेश्चन हमने किया था, different people have different goals. For a boy it can be something else, and for a girl it can be something else. And दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्लास 10, people look at mix of goals. यानी कि besides income we also need different facilities. अब सबके लिए सेम नहीं होता है. For somebody it might be facilities for the family, for somebody it might be safe and secure atmosphere, the working atmosphere. There should be all of these. And उसको हम लोग जो है we relate it with
डेवलपमेंट, यानी कि अगर उस एरिया में वो चीज नहीं है तो हम कहते हैं भाई वो एरिया डेवलप नहीं है, दैट एरिया इज नॉट डेवलप. तो as I said, we are not dealing with any development which is personal, we are dealing with the nation. अब आप लोग, as I said, in 11th and 12th standard you would be analyzing the data. So what is national development? We call India किस कैटेगरी में आता है? Why US is called a developed country? Why Thailand is called an underdeveloped country? Why UK is called a developed country? क्यों कहते हैं हम? That means there are many variables. वहां पर लोगों का income, वहां health services, facilities of education, public facilities in India. I will take two cities of India. If you go to Mumbai, if anyone has gone Mumbai, anyone? No. If you have gone to Mumbai, there you would find the cars on the road, but people prefer public transport. But people prefer public transport. And not it is that कि कोई सिवाय celebrities के, most of the people, even at the high profile also, they travel by metro and public transport. एक तो रीजन ये है कि वहां पर इतनी भीड़ होती है कि आप एक जगह से शुरू हो जाओगे, दूसरी जगह पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है. एंड सेकेंडली, द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अवेलेबल. You can go to any corner from any corner without any hassle. I'm a very frequent traveler to Mumbai and we travel avidly. Very easy. But if you come to Delhi, you cannot travel from one place to another क्योंकि आपको ब्लू लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन, पर्पल लाइन, सारे लाइंस को क्रॉस करना पड़ता है. एंड दिस टाइम यू आर स्पेंडिंग, एंड मोर ओवर आपके जो अभी तो right now it is quite good, but earlier it was not. And people are able to afford the private vehicles also. Now let us come to US, UK. There if you see, you will again find people travel by normal train. Very commonly, मतलब आप वहां खड़े हो, you will see in the morning the train comes, they travel and there is no hassle. The trains are beautiful, hygienic, and you can very well travel easily. And the public transport is more as compared to private. That means वहां जो गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक फैसिलिटीज दे रखी. If you come to the health services, they have a common health service. जितना वो लोग टैक्स देते हैं उसके अकॉर्डिंग दे कैन गो टू एनी हॉस्पिटल एंड गेट द ट्रीटमेंट. वहां प्राइवेट ट्रीटमेंट्स नहीं होती. Income, of course, better. That is why that country is called developed. When it comes to countries like Thailand or other countries, we call them underdeveloped. And India comes between a developed and underdeveloped क्योंकि हम fully developed नहीं है, but we are not also underdeveloped. So we come under the developing country. तो अब ये जो मैंने बोला आपको, ये तो आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल. तो हु कम्स टू फाइंड आउट, किसके द्वारा ये पता लग जाता कि हम डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है? हु इज द अथॉरिटी? तो ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट वी से डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री. And
वर्ल्ड बैंक क्यों लेता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक इज द वन जो इकोनॉमिक्स को डील करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दे गिव यू द लोन, लेकिन वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है टू रिवाइव द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अगर उसको उस कंट्री के इकोनॉमी में कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो इसको भी सजेस्ट करता है। सो वर्ल्ड बैंक इज द फर्स्ट एजेंसी जो क्राइटेरिया रखता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। बच्चा इस वाले को तो इतने अच्छे से लर्न करना। दिस इज देर आर टू क्वेश्चंस एट द बैक ऑफ योर मतलब की बुक, एंड दिस क्वेश्चन इज 100% short from this particular chapter, one of the most important and repeated question. वर्ल्ड बैंक जो है वो असेस करता है द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब इस इनकम को कैसे करता है? यहां पर आई हैव रिटन वन फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज वन ऑफ द फॉर्मूला जो आपको जो है बाद में करना भी होगा। देयर इज वन क्वेश्चन एंड इट कम्स इन वन मार्कर। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मतलब आपके पास द डेटा गोस, अब ये डेटा कैसे जाता है सेकेंड चैप्टर से पता लगेगा आपको। द डेटा गोस टू द वर्ल्ड बैंक कि एक कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी, इन तीनों सेक्टर्स में से ओवरऑल इनकम क्या रहता है। नाउ दिस इनकम इज नॉट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज एन एवरेज। और टोटल पॉपुलेशन, जैसे हमारा पॉपुलेशन इस वक्त 1.4 बिलियन, एंड उसको हम एवरेज इनकम या पीसीआई भी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। वी ऑल्सो कॉल इट एज पर कैपिटा इनकम। एंड देन इन यूएस डॉलर्स, if the country's overall PCI is 13,205, उससे ज्यादा है तो उन कंट्रीज को हम डेवलप्ड में रखते हैं। बिटवीन 1086 टू 13205 के अंदर है तो डेवलपिंग, और उससे कम है तो अंडर डेवलप्ड। एंड राइट नाउ इंडिया कम्स अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये जो एवरेज इनकम है, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, again an important question. Are averages a right way to calculate the development of a country? Are, क्योंकि एवरेज में क्या होगा, अब आप लोग कितने बच्चे हो? 4 बच्चे हो, ठीक है। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। से आई एम सेइंग दैट आप सबको जो है यू ऑल हैव टू गिव मी 2000 रुपीज, ठीक है। अब आप कितने हो? 4 हो। आयुष, अन्विषा, आयुष गांधी एंड ईशा, सॉरी ईशिता। तो 2000 रुपीज इंटू 4 यानी कि 8000 रुपीज आई शुड गेट, राइट। बट नाउ आयुष नायर हैज गिवन मी 3000 रुपीज, अन्विषा हैज गिवन मी 2000 रुपीज, right, and Ishita has given me 3000 rupees. Ayush Gandhi has not given me anything. It's an example. अब टोटल तो मेरा 8000 आ गया, बट मैं कह रही हूं 4 बच्चों ने मिलकर 8000 दिए, बट हैज रियली ऑल द 4 गिवन? has in real all the 4 given? One child has not given. तो जब हम लोग एवरेज को कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंट्री में, हमने कहा पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक इंसान को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर वी ऑल वर्किंग? नो, वी ऑल आर नॉट वर्किंग, फर्स्ट। सेकेंडली, is every state
contributing the same income? In India, we have 28 states and 8 union territories. So are all the states contributing the same income? Whether Jammu, whether Kashmir, whether this Delhi or Kerala or Karnataka, are they contributing the same? No. There might be states like Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab जो ज्यादा contribute कर रहे हैं. And then there might be states like Bihar, Odisha जो कम contribute कर रहे हैं. लेकिन जब हम एवरेज लेते हैं तो हम कहते हैं सबने कंट्रीब्यूट किया, राइट? सो दैट इज व्हाई जो एवरेज इनकम होता है, दैट इज नॉट द राइट क्राइटेरिया. व्हेन आई एम डूइंग इट विद द एनसीईआरटी, I'll show you the question which is important. Still, World Bank uses only the criteria of PCI, that is total income divided by total population. And according to that, it lists the countries underdeveloped, developing, and underdeveloped countries. The second agency which collects the data for development is UNDP. And the full form of UNDP is United Nations Development Program. It's a program under UN. And ये लोग क्या करते हैं? They take up the criteria of income, that is PCI. Then the health, जिसमें वो लेते हैं birth rate, death rate, infant mortality rate. Then education, जिसके अंदर वो लेते हैं literacy rate. Then public facilities, transport, public distribution system, hygiene, इन सबको लेते हैं. They take up all these criteria. और ये जो criteria है, this is shared by NSO, हमारे इंडिया से. From India, it is NSO, National Survey Organization. पहले इसको NSSO कहते थे, अब हम इसको NSO बोलते हैं. And ये जो NSO है, इनका काम होता है to collect the data from all the areas, rural, urban, सब जगह से लेना. और उसके बाद they take up this data, they pass into different agencies. तो यहां से UNDP के पास जाता. आपका जो सेंसस बनता है, वहां से डेटा कलेक्ट होती है. कितना आपका एक जगह पे बर्थ रेट था, कितना डेथ रेट था, व्हाट वाज द IMR, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट, और इस तरीके से दे टेक अप ईच एंड एवरीथिंग. नाउ व्हाट इज बर्थ रेट? बर्थ रेट हमारा आता है द नंबर ऑफ बर्थ इन एन एरिया. The number of birth in an area per 1,000, 1,000 लोगों के बीच में एक साल में कितना बर्थ हुआ. And death rate is opposite to it, the number of death in an area per 1,000. IMR is the number of children बिफोर 1 year, एक साल से पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज दे डोंट गेट द इम्यूनिटी, उनको बूस्टर्स नहीं मिलते हैं, उनकी मदर प्रेगनेंसी के दौरान बीमार होती हैं, उन सब की वजह से जो बच्चों की डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. और अगर आप इंडिया के एक डेटा को देखोगे तो you will find that places like Maharashtra, then आपके पंजाब, इनमें पंजाब,
उड़ीसा, बिहार, इन जगहों पे IMR जो है बहुत हाई होता, यानी कि वहां पर जो बच्चों की नंबर ऑफ डेथ है वो ज्यादा है। वेयर इज केरला विच इज हैविंग द लोएस्ट IMR, मतलब वहां बच्चों की जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर दे ग्रो टू 1 year, द नंबर ऑफ डेथ इज वेरी लेस। वाई? आपकी बुक में है, क्वेश्चन है। दिस इज बिकॉज इन केरला यू हैव द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ। वहां फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ इज गुड, वेरी गुड इन फैक्ट। द फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन इज मोर. But if you go to Odisha, if you go to Bihar, you will find that hospitals aren't there. The child care, the mother care is not there. तो इसीलिए वहां पर IMR आपका ज्यादा है। सिमिलरली बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दैट शुड बी बैलेंस्ड। अगर बर्थ ज्यादा है और डेथ कम है, व्हाट विल हैपन? द पॉपुलेशन वुड बी एक्सीडिंग एंड खाने की दिक्कत हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, अगेन द सेम प्रॉब्लम। सो देयर शुड बी अ बैलेंस। देन आपका आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में आपको, मतलब आपके सारे 1 1 मार्कर क्वेश्चन है, व्हाट इज लिटरेसी रेट? एनी चाइल्ड above 7 years, any above 7 years who can read and write any one language with understanding is called as literacy rate. यानी कि हम सब literate. Now what is the difference between literacy and educated? Education is when you are attaining the degrees, and literacy is when you are at least able to read or write one language with understanding. Again, if you see, Kerala has the highest literacy rate, 100%, followed by Chandigarh. And if you go to again Odisha or Bihar, the literacy rate is very less. The same thing, education is lagging there. So that means income, health, literacy rate, these are also important for development. Then again public facilities. अभी मैंने आपको एक US का एग्जाम्पल बताया था, दैट देयर यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनफैक्ट हम लोग जो है, मतलब पीपल लाइक अस कैन नेवर इवन अफोर्ड। फ्रांस के अंदर टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, you in Indian money it is around 10,000 rupees, and there you, if you are able to understand, public transport is very easy. We never traveled, we twice we took the cab, that was due to certain reasons, but we traveled by the metro and it was quite convenient. You can travel across, no problem is there. It's not like a matter of status, it is just you have ample facilities. तो ट्रांसपोर्ट का होना, देन सिटी, जो हमारे जैसे भी मैंने बोला उड़ीसा, बिहार, in India also we had introduced PDS, public distribution system, the ration, so that the poorest of the poor people are also able to buy the basic things. रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो कितना है, हाइजीन, सैनिटेशन, ये सारे जो क्राइटेरियाज है, दिस इज टेकन बाय UNDP. अच्छा, तो अब UNDP करती क्या है? UNDP जो है takes up this data, compiles it, and then it makes a report. एक रिपोर्ट बनाती है सारी कंट्रीज का, अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑल द 290 कंट्रीज का वो एक रिपोर्ट बनाती है, एंड उस रिपोर्ट में इट गिव्स अ रैंक टू द कंट्री अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट. एंड अनफॉर्चुनेटली
India stands at, as per the data of 2023, ये डेटा चेंज होता रहता है, इंडिया स्टैंड्स ऑन 130 एंड हमसे छोटा, अभी हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा था कि श्रीलंका में काफी झगड़ा चलता है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, येट श्रीलंका स्टैंड्स ऑन 73rd रैंक और हम 130th पे हैं। अब मैं एक बच्चे का स्टाइल बताऊं। बच्चे कहते हैं कि मैम, जैसे बच्चों से पूछा जाता है ना, बेटा आपके मार्क्स कम क्यों थे, उनका एक होता है, मैम मैं तो, मेरे तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, मेरे से भी पूरा मतलब कि बुरे बच्चे, टू सेटिस्फाई। एंड द सेम थिंग इज देयर, यस पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये हमसे भी कम है, लेकिन इंडिया बीइंग अ लार्ज कॉन्टिनेंटल, मतलब सब कॉन्टिनेंट होते हुए, इंडिया स्टैंड्स ऑन 130th रैंक, whereas the small island country Sri Lanka is better than us. Why? 3 marker question. ये पहले 3 में आया था. Why? This is because Sri Lanka spends more money on education, health, and public development. Whereas in India, ये तीनों जो हमारे human development है, which is education, health, skills, ये कम है. And that is why, even though we are having all kinds of resources, we have the land resource, forest resource, water resource, minerals, human, still we are lagging behind. जब हम लोग हेल्थ को लेते हैं, ये आपके कैलकुलेट करने के लिए भी आएगा क्लास 10th, we also take one criteria which we call as BMI. और BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स. दिस इज द वन विच सेज वेट, जो भी आपका वेट है इन किलो, एंड वॉट एवर योर हाइट, दैट इज इन, यू शुड हैव इन मीटर स्क्वायर, यानी कि अब हम बोलते हैं 163 सेंटीमीटर. तो 163 मतलब 1.63. we convert it, आपको उसमें दिया जाएगा in your, and it's a 3 marker question. BMI, weight in kilo and height in meters. से एक इंसान है, उसका जो weight है it is say 65 किलो, और उसको जो height बताया है वो समझ लो कि 1.7 meters. So when we calculate it, it is 65 upon 1.7 ka square. In a simple way, it is 1.7 ka square. I'm using the calculator. (65 upon 1.19). So we divided 65 divided by 1.19 is equal to, no, there's something. (2.8). It is 22.4. It is 22.4. तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ है, that tells कि if you are 18.5 से कम हो, तो then you are underweight. You are underweight. That means आप malnourished हो. 18.5 से 24.9 के बीच में हो तो you are healthy. That means ये जो यहाँ पर हमने बनाया है 22.4, this person is healthy. This person is healthy. And 25 से 29.9 है तो overweight.
and above 30 it's obese. यानी कि एक इंसान 29.9 से ज्यादा है या 25 से ज्यादा है तो वो ही और शी इज प्रोन टू डिजीजेस, और अगर 18.5 से कम है तो वो मल नरिश्ड है तो अगेन ही और शी इज प्रोन टू डिजीजेस. एंड दैट इज व्हाई बीएमआई जो है दैट इज आल्सो इंक्लूडेड फॉर हेल्थ. हेल्थ के अंदर हम बीएमआई को भी इंक्लूड करते हैं टू फाइंड कि if the nutrition is an important aspect, and this particular question can be there as a numerical, it has been there. और ये जो फॉर्मूला है बीएमआई वाला ये तो आता है 1 मार्कर में. तो यूएनडीपी टेक्स अप, it makes up an index and it gives us the rank to all the countries, whether it is India or US or any country, small country or bigger. And according to that, India still is on 130th. मतलब बीच में तो 134th में था, then it came to 129, then 130. It changes on. But why we are not in the first 50 countries? Because अभी हमारा education, health, public facilities, it needs to be developed. So that means these are the criteria for development. Development का मतलब ये नहीं कि लोग कितना कमा रहे हैं. Development का मतलब है कमाने के साथ what the country is having, whether the education level is good, whether the health level is. अब health का मतलब क्या है? Health doesn't mean how many hospitals you are having in front of you. It means, are the poorest of the poor able to find a good doctor? Are primary health centers, dispensaries, and hospitals available in all the areas of the country? Yesterday, I was giving you the example, I think, of no, I was giving to somebody else. In APJ Abdul Kalam, he belongs to Rameshwaram. And if you go to Rameshwaram, even till date, till 2024, you will not find hospitals there. The people there have to go to the nearest Ramanathapuram for any major surgery or any kind of major, health. Or they have to go to Madurai or something else. That means Rameshwaram is a very good pilgrimage place, but it is not developed. You don't have the schools after 8th standard. तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वहां रोड्स हैं या वहां लोग कमा रहे हैं. इट ऑल्सो मीन्स वहां पर एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज है, वहां पर जो लोग हैं उनको हेल्थ का क्या फैसिलिटीज मिल रहा है, व्हाट इज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर देयर. And this is for the poorest to the poor. Are they able to get that? And that is why somewhere India lags behind. Last but not the least, development never means sirf income, sirf health. It also means how we are using the resources we have. ये वाला जो अब मैं पोर्शन करवाने वाली हूं ना, this same question is in your first chapter of geography, resources and development, and the same question is there in economics also. You can write the same answers for both. और क्वेश्चन सेम ही आता है. डेवलपमेंट डजंट मीन कि यू आर गेटिंग द इनकम, आप चीजों को जो हो ओवर यूज कर रहे हो, overusing the water, overusing the forest, overusing the agricultural land. अगर हम उन सबको overuse करेंगे तो one day they all will perish, चाहे वो renewable हो या non-renewable. Renewable resources होते हैं जो हम दोबारा बना सकते हैं, like water. ये पेपर में आपके क्वेश्चन आता है, जब इकोनॉमिक्स से आता तो वो कहते हैं give example with water. In geography they don't give this question, but आप आंसर दोनों का सेम है. Even in the book also it's more or less same. So water is a renewable resource, but
If we are overusing it, like Punjab, in Punjab, the water table is already down. In Maharashtra, the water table has already gone down. In Tamil Nadu, it is already gone down. India is supposed to be in the scarcity of water by 2025. तो अगर वो water table down हो जाएगा तो then what will happen? कहाँ से पानी आएगा? Then how you will be farming? And अगर हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स मिनरल्स तो इनको फॉर्म होने में इट टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स. So that means whether it is a renewable resource or a non-renewable resource, we must go for sustainable development. What is the meaning of sustainable development? आपके इस वाले चैप्टर से आता है कि द अर्थ द मतलब कि जो आपका एनी पेरिशिंग जो होता है दैट डजंट हैव एनी बाउंड्री. अब ये नहीं बोल सकते कि मैम वो तो पंजाब में ज्यादा यूज हो रहा है तो हम क्या करें. इट डजंट हैव नेचर डजंट हैव एनी बाउंड्री. बाउंड्री इज फॉर वो हमने बना रखा है. So when anything would perish, it would be affecting everyone living on this earth. So this means we need to make development which should be made for the present. यानी कि जो हमारे पास resources है उन्हें हमें सोच समझ के यूज करना है and without compromising for the future. हमारे लिए तो डेवलपमेंट हो जाएगा लेकिन आगे लोगों के लिए नहीं होगा. आने वाला जनरेशन शायद उसके पास पानी नहीं बचेगा, उनके पास मिनरल्स नहीं बचेंगे. So that cannot be called as a sustainable development. Sustainable development says when the development is made for the present generation without compromising for the future. So both renewable or non-renewable, we need to use it judiciously. Judiciously मतलब सोच समझ कर. So when a country is taking up all these criteria, it is using a sustainability. आजकल there are lots of programs which are run by the government for sustainability. And if the country is having good income, health, education, public facilities, then those countries can be called as developed. So that is the chapter development. In the next session, we would be starting the same chapter along with our NCER.